जावास्क्रिप्ट के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो सबसे ज़्यादा इंटरव्यूज में पूछा जाता है। व्हाट इज इवेंट लूप? इस ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है, बट ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग वी फेल्ड टू आंसर दिस एंड अल्टीमेटली वी फेल टू क्रैक द इंटरव्यू। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इवेंट लूप अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। Let's move. Let's go to JavaScript visualizer. I have write some code here. Okay. There is a console log with say code start. Sometime JavaScript क्या है? JavaScript एक सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, कभी कभी कैसा होता है, जावास्क्रिप्ट में कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जो अननोन अमाउंट ऑफ टाइम लेते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए। सपोज हमारे पास दो फंक्शन है ए बी, विच टेक like 5 to 3 seconds of time to complete it, so I have called this function using set timer। और हमारे पास कुछ ऐसे भी फंक्शन हो सकते हैं जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, या फिर जैसे कि when API is called I want to call some other function like function C and function D I'm calling in promises। Okay, then I have some like array, and I have function which remove repeated number. I have called that function here remove repeated array number, and in the last I have function name last which print end of the code. This is my complete code. So what happened, first JavaScript will run execute. In execution phase it will like run from sequentially from line number 1 to at the end. So first it will print code start, then it will call function a. Okay, so it's a callback function, so this function will be registered in task queue and timer will be started. Then it will call function b, and this will be registered also in the task queue and timer will be started. Okay. Then this promise is resolved. After this promise is resolved, this function is called. So this promise is also registered in the micro task queue, and this function d is called in promise. So this also registered in micro task queue. Okay. Then this rest of code will be executed line by line. So let's see step by step how this function will be registered in task queue and micro task queue. So what event loop does is, when this call stack, when all the code is completed, when all the code is executed by like in the last function, the function last will be enter in the call stack, and when it executed it will be popped out, and this call stack will be empty. So event loop continuously look into the call stack. When call stack is empty, then it will go to the micro task queue and see if there is any task. And as we know, we have registered two callback function C and function D. So it will run function C, then function D, then it will go to the task queue. Okay, let's see by visualization. Okay, when I run, okay, the script is
this sequence executed a script through it, right? Okay, so let for the step one, in the step one this code is start. Okay, then this callback function A has been registered into the task queue and timer has been started. Then function B is registered and timer is also started. Okay, then promise function is called and it is been registered in the microtask queue, and function D is been registered in the microtask queue. Then this function, this remove repeated number function is been added into call stack. It will execute first. Okay, so in this we have calling this anonymous function. Okay, we are filtering, so this filter is been done. Then first, then second time, because we are looping, we are still in remove repeated number function. In this function we are calling this anonymous function repeatedly. Okay, so this function, after the completion of this function, then console log result will be print. Then this remove repeated number function will be removed. Our call stack is empty. Then our function name last will be into the call stack and it will be executed, and again our this last function will be popped out of the call stack. Now our call stack is empty and all our code is been executed. तो अपना इवेंट लूप क्या करेगा, अब चेक करेगा, जैसे उसे कॉल स्टैक एम्प्टी मिलेगा तो वो माइक्रोटास्क क्यू में देखेगा if there is any task, and here we have task C and D. So event loop will check into the microtask queue and place the task C into the call stack and run it. Then after completion of task C, it will pop out of the call stack. ये call stack से बाहर निकल जाएगा. Okay. Then event loop again go to the microtask queue and see if there is any task remaining. और अगर वहाँ पे टास्क है तो वो फिर से वो टास्क को कॉल स्टैक में डालेगा और एग्जीक्यूट करेगा. नाउ फिर से इवेंट लूप को कॉल स्टैक एम्प्टी मिला और वो फिर से माइक्रो टास्क क्यू पे जाएगा. अब यहाँ पे कोई भी टास्क नहीं है तो वो अब टास्क क्यू में जाएगा. टास्क क्यू में चेक करेगा, अगर वहाँ पे उसे कोई टास्क कॉल बैक फंक्शन मिलते हैं तो वो उसे कॉल स्टैक में पुट करेगा एंड एग्जीक्यूट करेगा. In this case, task A and task B. Okay. First, it will be put task B. Since it had executed earlier than this function A. Okay. और जैसे ये टास्क भी कंप्लीट होगा, ये बाहर निकल जाएगा कॉल स्टैक से. इवेंट लूप फिर से चेक करेगा टास्क क्यू में कुछ है टास्क, अगर है तो फिर से कॉल स्टैक में सेंड करेगा और इसे एग्जीक्यूट करेगा. आई होप आपको इवेंट लूप समझ में आ चुका होगा कि हाउ इवेंट लूप वर्क, हाउ वो कैसे माइक्रो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है माइक्रो टास्क क्यू को होती है, देन सेकेंड प्रायोरिटी विल बी टू द टास्क क्यू.